नेगेटिव इज़ अ गुड स्पेस टू बी इन। बहुत कुछ करने को मिलता है, मारने को मिलता है, मार खाने को मिलता है। अब रेप कट गया है, लेकिन वो This film is even more special because everyone has already loved the first part. I really like Ranbir Kapoor also. Right. He also played Sanju. Right. हमारी पिक्चर तो एकदम गली गली सिनेमा है, गली पिक्चर है एंड सिटी मार पिक्चर है. ए लबाडे कौनते तारो और इसका एक साउंड है वो अमेजन से आया. बहुत जल्द रिलीज होने वाली है साउथ फिल्म डबल स्मार्ट, जिसका आज मुंबई में हुआ सॉन्ग लॉन्च. आपको बता दें कि इस गाने का नाम है बिग बुल और इस सॉन्ग लॉन्च के मौके पर मौजूद थी यहाँ पूरी डबल स्मार्ट की टीम, यानी कि संजय दत्त, राम पोथी नैनी, पुरी जगन्नाथ, काव्या थापर और चार्मी कौर. भैया ये देखते हैं इस सॉन्ग लॉन्च के सभी नजारे, करते हैं कलाकारों से खास बातचीत, जानते हैं आखिर क्या कुछ है खास इस गाने और इस फिल्म में. नमस्ते, कैसे सब लोग? मस्त है ना? तो ठीक है. तो ऐसी कोई बात नहीं जो पूरी सर और शार्मी और सब बोल रहे हैं कि मेरे पास 7 पिक्चर है और डेट नहीं मिली. पूरी सर हम लोग सब फैन हैं इनके. एंड लाइक हाउ राम सेड दैट he kind of changed cinema in Telugu. He created that swag, that coolness and everything. And I want to thank Puri sir for letting me be part of Double I Smart Shankar and making me Big Bull. Thank you, sir. Charmi, सर जी, मैंने बहुत परेशान किया है. सर जी, सॉरी. ऐसे दिन पंजाबी के परेशान बहुत किया है यार. लेकिन आई थिंक दैट्स द रीजन दैट दिस प्रोडक्ट कुड कम अबाउट इज योर परसिस्टेंस, योर फोकस. थैंक यू जी. थैंक यू फॉर लेटिंग मी बी अराउंड. सर जी, थैंक यू जी. और ये पंजाबी कुड़ी हैगी, शी इज डन ग्रेट जॉब एंड शी इज लुकिंग सो गुड. और इसको एक चीज़ है, इसको कुछ मार वार हमेशा पूछो तो मार ही लगता रहता है इसको यार. सर मार मुनता छोड़ चिंता. अब मैं पूछा अभी कुछ हुआ क्या, बोले हाँ कुछ है, यहाँ पे लग गया. ख्याल रखो अपना यार, काम करो. विशु, थैंक यू फॉर बीइंग देयर. एंड इसको मैं एक पिक्चर दे रहा हूँ. So inspiration for you to lose some weight, you know. And प्रोडक्शन के इश्यूज की वजह से बेचारा मोटा हो and गया. of course राम, you know. इतना मजा आया इसके साथ काम करके. अभी तो चूजा लग रहा है, लेकिन उस टाइम वो डबल स्मार्ट में मस्त लग रहा था. लेकिन अभी एकदम अच्छा लग रहा है, यंग लग रहा है, छोकरा लग रहा है छोटा सा. And it was a pleasure, it was an honor working with him, like a younger brother to me. And he's a good performer, he's a very hard worker. And we had a lot of fun while doing this film in Bangkok और यहाँ वहाँ हर जगह. और हम लोग ने मस्ती भी थोड़ी बहुत की. I hope आप सब लोगों को ये पिक्चर अच्छी लगेगी and आपको मतलब you'll enjoy the film. I want to thank everybody again, and Bhabhi is there, and Bhabhi, thank you so much. Sangeeta. Thank you, Bhabhi. And बस अपन के पास और कुछ भी नहीं है बोलने के लिए यार. Hi, good afternoon, Mumbai. Thank you all for being here first. And yeah, like I said, it all started off from YouTube, where we didn't realize that a lot of North Indian people were watching a lot of South films. And we had such loyal people who've been constantly asking us to release the film, because they used to wait for a year or so. And now finally, this entire pan-India thing came about, and we were able to release it on the same day as well. And especially a film like Ishmat Shankar. So most of the film has been shot in Mumbai. Double Ishmat has been shot in Mumbai. So I was lucky to have witnessed the Ishmat Shankar madness here as well.
you know, the smallest of things, like when I used to go to shoot, I used to come across people on the road and all of that, and everyone used to keep, you know, screaming Shankar and all of that. So very glad that we're able to release this film simultaneously up north as well. And yeah, like I say, this character is all about mental mass madness. So one small disclaimer, I do not endorse him. So he's, in case you want to follow him, if you get inspired and follow him, I'm pretty sure that within half an hour you'll be in jail. So please don't. He's just to be enjoyed and entertained. Watch him on screen and leave him there. So he's really mental. And I love the way Puri sir has written this character for me. And it's always an experience for an actor, you know, something that you can't even think of doing in reality. You're playing it on screen. And yeah, I enjoyed playing it a lot. And down south, the people also have enjoyed the first part so much, and they've made it a huge hit. And now we're coming with Double is Smart, with double the energy and double the everything. Yes! And yeah, we're pretty excited. And the highlight is, I think, Baba. You know, Puri sir, when he first narrated the script, we couldn't think of anyone else but you. But again, you were like, Charmi told me that you signed 7 films. But again, her being her, she flew to Dubai, and I don't know how she managed to get your dates, but I just watched the film recently, and I can't imagine anyone else but you. And I wouldn't call this a debut, but because you're already a superstar everywhere. A superstar in Telugu. And First film. it's an honor working with you, and it's an even bigger honor getting to know you. Because I keep saying, me and Puri sir keep discussing, you know, when you're performing or just sitting there, we're like, you know, what didn't this man experience in life? You know, you're like a silent saint, but you're a sweetheart. Thank you for pampering us. And it's an honor working with you. And yeah, about Ishmat Shankar and Puri sir. You know, we see heroes with attitude. I think he's the one who's introduced attitude, you know, the word attitude to heroes all over India. I think it started down south there. And, you know, the cool attitude, like earlier before him, I think when heroes had to show attitude, they had to stand like that. But now after Puri sir came, you know, this entire coolness came about, and he's a complete trendsetter. Yeah, complete swag. And sir, it's always an honor working with you. And yeah. Thank you for writing this character and this madness. And he had working with 7 him is films very lined cool. up. That's Had why I some call her the 7 go-getter films also. lined up. Oh, that's an announcement. That time, That's like yeah. breaking news right now. When we thought of him, he signed 7 movies. He said no dates and all, so we were worried, and finally got his dates. And I'm a big fan of Sanju Baba, and 4 decades experience, a versatile actor. He played all kind of roles. Yes. Thank you for doing this film, sir. Love you, sir. Thank you so much. We are Please. happy we are launching him. It is his debutant film in Telugu. So we have the privilege of launching him in Telugu. पहला मैं ये कहना चाहता हूँ संजू बाबा एक 22 years बैक हैदराबाद आए थे मुन्ना भाई MBBS वो टाइम पे और तेलुगु सेम फिल्म डबिंग हुआ था आप हमारे लोकेशन पे आए थे जब देखा फिर इतने सालों के बाद अब देख रहा हूँ मैं आपको ये हमारे फिल्म में और आपको देखते ही मेरी माँ की याद आ गई क्यों बोले तो मेरी माँ 100 times फिल्म देखा मदर इंडिया Wow. कभी भी टीवी में अगर आ गया तो वो चैनल चेंज नहीं करती अगर कोई भी चैनल चेंज किया तो उसको बहुत बड़ा गाली मिलेगा बहुत बड़ा अरे भाड़ खाओ क्यों रे उसको ऐसे क्यों चेंज कर रहा रे तो आई बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश आई स्टार्टेड माई करियर 1978 आई एक्टेड 1250 मूवीज तेलुगु तमिल हिंदी मलयालम कन्नड़ा एंड रिसेंटली नेपाली मेरा भाई पूरी जगन्नाथ हम लोग साथ में ऑलमोस्ट 30 साल से जर्नी कर रहे हैं हम लोग हर फिल्म में एक डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर मेरे को चांस मिलता तो ये फिल्म में इसको अमेजन फॉरेस्ट से लेके आया सो अमेजन फॉरेस्ट से क्यों लेके आया अभी नहीं बोलता हूँ 15 तारीख को बोलता हूँ
ए लबाडे कौनते तारो, और इसका एक साउंड है वो अमेजन से आया। हेलो मुंबई, हेलो एवरीवन। बहुत ही खुशी हो रही है कि आज जो हमने इतने प्यार से एक पिक्चर प्रोड्यूस की है जिसका नाम है डबल स्मार्ट। 2019 में वी वर ब्लेस्ड विद अ ह्यूज ब्लॉकबस्टर इन तेलुगु, और आपकी कृपा है कि आज हम 5 लैंग्वेजेस में इसका सीक्वल डबल स्मार्ट आपके आगे लेकर आ रहे हैं। अगस्त 15 को हमारे साथ में और 3 पिक्चरें आ रही है। सारी पिक्चरें बहुत अच्छी लग रही है, तो थोड़ा थिएटर के लिए लफड़ा हो रहा है और नॉर्थ इंडिया में, लेकिन दैट आई विल लीव इट टू द एक्सपर्ट्स अनिल थडानी जी एंड दुग्गल जी। दे विल हेल्प अस do justice, and I hope we have good run in North India also. Mr. Puri Jagannath, he deals with the alphabets and I deal with numbers. So we do not enter each other's zone at all. Even though he is well aware of everything, he is fantastic. He's a producer's director. But we have our own departments, and he's just amazing in what he does. I'm so thankful that he gives us that space. First of all, hello Mumbai. This is the first ever Telugu film that I'm promoting in my hometown. So I'm feeling very, very blessed at this moment. Secondly, I think I am currently, मुझे ऐसा लगता है इस वक्त तो मैं एक सपने में हूँ, जो सपना मैंने बचपन से मैं देखते आई हूँ। तो पहली बात तो एज एंड व्हेन आई ग्रू अप मैंने संजय सर की इतनी सारी फिल्म्स देखी, तो टू से आई मीन टू से द लीस्ट व्हेन आई लुक्ड एट हिम आई वाज ब्लैंक, और उनका सिर्फ एक गाना मेरे दिमाग में चल रहा था, वो रात अपन 2 बजे तक पिया। तो जब मैंने उनको देखा मेरे दिमाग में यही चल रहा था, मैं और कुछ आया ही नहीं। आई वाज सो डम्बफाउंडेड एट दैट मोमेंट। तो डेफिनेटली मैं उनके साथ मैंने स्क्रीन स्पेस शेयर किया। आई एम ट्रेम्बलिंग व्हाइल सेइंग दिस बिकॉज इट्स सच अ huge dream for me that I am living currently. And thank you Sanjay sir, you were a blessing, and हमने पंजाबी में बात की and he made me very comfortable. So thank you, and it is definitely a blessing कि मैंने आपके साथ screen space share किया. Secondly, Ram, you are by far, I'm saying this out and loud, by far the best co-star I've worked with. Wow. And I have found a great friend in you. And thank you for everything. नो वही बोला। क्या लफड़ा भाई। हे राम ऐसा कुछ नहीं है, बट नहीं जेन्युइनली को स्टार के साथ आपकी बॉन्डिंग ऑन सेट जो होती है, बट वो इतना केयरिंग को स्टार है कि ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मार मुंता मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, एंड एवरीबडी इज़ लाइक अब आप क्या खाओगे, बिकॉज इट वॉज अ स्टमक इन्फेक्शन। सो मैंने सिर्फ बोला स्पिनच सूप, एंड that day itself, और I think the next day उन्होंने अपनी मम्मा से homemade spinach soup बनवाया मेरे लिए, and I'll forever be grateful for that. I think such little things show the kind of a person he is, and he's hilarious also as a person. So thank you for being you. All the best, and hope we work a lot in the future. Now I'm going to get a little emotional because I'm going to speak of Charmi ma'am. She is truly, truly a boss lady and an inspirational woman, and I have hats off to you. आपके चरण स्पर्श करना चाहे। She should be the Charan Sparsh Charmi. That's what she is, because I really, really look up to her. She is a go-getter and she will do anything for her work, and that's an inspiration for me. And not only that, she's an extremely nurturing, caring, loving person. And I know, again, same day when I was sick, how she took care of me, I can never forget. Usually I always say that I'm a director's actor, but I am a producer's actor too now. I want to be at least. Thank you. So thank you for always doing everything for me. I love you. Puri sir! This is the biggest feather on my hat in my career journey, to be a Puri Jagannath heroine standing here today. Thank you, sir, for seeing Jannat in me and giving me an opportunity to be double smart. Just a small story. I had auditioned for Ismat Shankar, but at that time things didn't work out.
because Double is Smart had to happen to me. And thank you for giving me this double power pack mass masala entertaining film. Thank you, sir. Love you. Yeah, it's hard to crack a sequel, I always. But I promise, and better than the first part. This story is much better than the first part. And Ram's energy is double than that, double than the first part, I can promise. And 6 songs are there, amazing songs. And energy Kavya is there. Ali sir, comedy is there. Absolutely. And Sabke Upar Baba, Sanju Baba is there. What else you want? It's a full entertainer. Right. Yeah. Generally don't comment on box office, but as an actor, what I like is it's being shared with a lot more people. You know, you can share your content with a lot more people. And yeah, Bahubali definitely opened gates up north and everywhere. And yeah, and this film is even more special because everyone has already loved the first part. So I'm sure a lot of people are looking forward to it, and yeah, pretty excited. Kaam karne ka, a lot of people. Right. But I really like Ranbir Kapoor also. Right. He also played Sanju. Right. Right. There's a connection there again. Right. एक टाइम था जब आप रोमांटिक फिल्में करते थे. अभी आपके सारे फ्रेंड्स वो रोमांटिक भी कर रहे हैं, एक्शन भी कर रहे हैं. क्या फैंस आपको वापस रोमांस करते हुए देख पाएंगे आने वाले समय में, या यही जो एक अलग बोल्ड अवतार आ गया है? अबे रोमांस, अबे आप क्या बोलते हो लेकिन? आप कुछ भी करो, हम आएंगे. सीटी बजाएंगे, ताली बजाएंगे. हाँ, रोमांस भी कर लेंगे अगर कोई अच्छी पिक्चर है, लेकिन आई मीन अपना जो जनरेशन है यार, वो मास के लिए काम करता था. तो हम लोग मासी हीरो है. अपन साजन कर लिया था एक टाइम, लेकिन बहुत अच्छी पिक्चर थी, गाने अच्छे थे यार. एक और कर लेंगे साजन. What attracts you so much to the South Indian films? This is your third project and it's again a negative lead. So what is it that I don't know. I think मुझे भी एक it's a challenge for me also, you know, to be in a South film, and negative is a good space to be in. You know, बहुत कुछ करने को मिलता है, मारने को मिलता है, मार खाने को मिलता है. अब रेप कट गया है, लेकिन वो लेकिन it's good, you know. I mean, at least there's a little something to do for an actor, you know, after doing so many films. do you have any aspirations to work in a Bollywood film? Yeah, I don't confine myself to one specific industry. I think I'm very open-minded as an actor. And if I like the script and I can justify the role, then I'd definitely do it. Any favorite Hindi film actors? ऐसा पूछना चाहते हूँ. Many, but I guess for me also Ranbir Kapoor after Animal has been like a Right. Right. top favorite. Right. Charmi ma'am, this one's for you. What according to you makes a pan-Indian film a hit, and what more films are lined up ahead for Puri Connects? Hello, everyone, again. So it's not about pan-India or South or Bollywood or English or Russian. I think Puri sir always says that local is global and content is king. And people are appreciating. It's so good to see people are appreciating good cinema, fun cinema, entertainment, masala. At the same time, there's amazing content. Different genres. So I think it's we should not have those kind of boundaries. Right. And just enjoy cinema. And हमारी picture तो एकदम गली cinema है, गली picture है, and city mar picture है. So I hope people enjoy this also on August 15th. I'm sure. Second last question. Puri sir, this one. You think now Rambhai is the new item boy of the industry? Definitely. What is Definitely. item boy? Sorry? What is item boy? Okay, one last question to everyone, and this is life में कब double smart बनने का try किया है? Have you sir tried ऐसा life में double smart बनने का कुछ किया हो?
हर इंसान को रहता है वो। हाँ, When was the last time and what did you do? बहुत किया। कितना बनूं? 45 ईयर्स हो गया। और बन ही रहा हूँ तब से। For you, चामी मैम, व्हाट इज दैट? डबल स्मार्ट बनने का ट्राई किया कभी? ये जो जब भी उनका चिप को प्रॉब्लम आता है होता है, मेरा दिन भर होता रहता है। तो कोई जरूरत नहीं है, मैं इधर होती हूँ उधर भी होती हूँ। और बड़े खूबसूरती से करती हो ये काम। पुरी सर, फॉर यू, डबल स्मार्ट, व्हाट इज डबल स्मार्ट? और आपने कभी ट्राई किया ऐसा बनने का? नहीं, I never tried, but I right. But as Ram bhai said, Yeah. you brought that attitude in the Correct, industry. correct. आप तो खुद में हो सर। संजू बाबा, for you, डबल स्मार्ट बनने का आखिरी बार कभी ट्राई किया था? मेरी लाइफ डबल ही नहीं, लेकिन You're asking him. मैं बोल रहा था मेरी लाइफ डबल ही नहीं, 100 स्मार्ट शंकर है। बट आई लव इट, आई मीन डबल स्मार्ट Right. मस्त है। Right. Ustad, for you. Yeah, I just played, no? No, in real life. In real life also. Huh? Kavya? I think for me, I'm going to first try to be smart and then double smart. बढ़िया है, ये No, best है। I am too naive first. I can be a little too innocent in that sense. So first पहले smart बनेंगे और फिर double smart. Chronology को समझिए। She order just पे got चलिए। scammed the other day, so. Yeah, I did That get trauma. scammed the other day. So. भाई ये टीम तो अपनी आने वाली फिल्म के लिए बेहद ही एक्साइटेड है। तो भाई अब देखना होगा कि ये फिल्म जब बड़े पर्दे पर रिलीज होगी तो कितना धमाल मचाती है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।